structural and functional unit of life. Why cell is called structural and functional unit of life? पहली चीज, what is a cell? Cell is called the building block of life. क्या कहा जाता है cell को? Building block of life. Building block of life. Smallest unit of a living organism. Smallest unit of living organisms. Cell is called structural and functional unit of life because the structure of human beings are made up of smallest unit of life, which are called cells. That is why it is called structural unit and functional unit. Each and every function inside the body occurs within the cells. Each and every function inside the human body occurs within the cells. हर कोई function human body में cells में होता है, inside the cell. ठीक है बेटा? Inside the cell. That is why cell is called functional unit of life. This is the reason your chapter mentions structural and functional unit of life. Because the structure of human beings consists of a smallest block which are known as cells, and each cell perform function, each organ perform function within the cells. ठीक है बेटा? This is the reason cell is called structural and functional unit of life. Cell को ही हम कहते हैं structural and functional unit of life. The word cell is derived from a Latin word. The word cell is derived from Latin word cellular, C-E-L-L-U-L-A, cellular, which means little rooms. Which means little rooms. Which means little rooms. ये जो सेल का वर्ड आया है, ये आया है लेटिन वर्ड से. उस लेटिन वर्ड को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर. जिसका मतलब क्या है बेटा? लिटिल रूम्स. जिसका मतलब क्या है बेटा? लिटिल रूम्स. लिटिल रूम्स. ठीक है बेटा? Our body contains trillions of cells. Our body contains trillions of cells, and it is a cell which determines whether the organism is unicellular or multicellular. If an organism consists of one cell, it is called unicellular. If it consists of multiple cells, it is called multicellular. But who studied cell? First of all, Robert Hooke. Robert Hooke discovered cell in 1665 by using primitive microscope. Primitive microscope. Primitive microscope. By using primitive microscope, he used the cork of a plant. He used the cork of plant. What is cork? Cork is a part of bark of plant. Cork is a part of bark of plant. Bark is a part of stem. Bark is a part of stem. उसको utilize किया and observed it in microscope. He see a honeycomb-like structure. A honeycomb-like structure. And named them cells.
named them cells. Honeycomb-like structure and named them cells. Somewhat this type. Honeycomb. In honeycomb there is a small pores just like this and named them cells. But he cannot observe the living cell. He can observe only the dead cell. The cell which is observed by Robert Hooke is not a living cell. It is a dead cell. It is a dead cell. It is not a living cell. He reported his findings in a book which is known as Micrographia. He reported his findings in a book which is known as Micrography. 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 After that, another Dutch biologist, Anton van Leeuwenhoek. Anton Leeuwenhoek. Another biologist, Anton Leeuwenhoek. In 1670. In 1670. First observed a living cell of bacteria. A living cell of bacteria using advanced microscope. This is the difference. Robert Hooke only sees the dead cell, but the first living cell, the cell of bacteria, was observed by another Dutch biologist, Anton van Leeuwenhoek, in 1670. Means after the 5 years of Robert Hooke. तो बेटा सेल की डिस्कवरी इस तरह से स्टार्ट होती है. स्टार्टिंग में तो रॉबर्ट हुक आता है. रॉबर्ट हुक सिस्टम का एक पार्ट लेता है, कॉर्क, उसको ऑब्जर्व करता है माइक्रोस्कोप के अंडर. वो वहां क्या देखता है? वो वहां हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखता है और उस हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को वो क्या नाम रखता है? सेल. मगर ये जो रॉबर्ट हुक ने सेल देखी थी, इट इज ए डेड सेल. इट इज ए हमें बेटा लिविंग सेल देखनी है, हमें डेड सेल नहीं देखनी है. इसीलिए दूसरा बायोलॉजिस्ट, डच बायोलॉजिस्ट, जिसका नाम था एंटोन वेन लीवनहुक, जिसने बेटा एडवांस्ड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया. रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप कौन सा था? प्रिमिटिव, मतलब जिसमें रेजोल्यूशन कम था, जिसमें लेंस अच्छा नहीं था. इसने बेटा अच्छा माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया और 5 साल बाद इसने क्या काम किया? इसने बेटा पहली लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया. कौन सी लिविंग सेल को? बैक्टीरिया. तो पहली लिविंग सेल अब किसने देखी बेटा? एंटोन वैन लीवनहुक. तो इसने बेटा पहली लिविंग सेल देखी. इसने पहली लिविंग सेल बेटा देखी. कितना टाइम है हमारे पास? अभी टाइम है उसके बाद प्लांट सेल, मार्सिलो माल्फिगी. ये और एक बायोलॉजिस्ट था, मार्सिलो माल्फिगी. 1671 फर्स्ट observed the plant cell. Marcelo Malfigi
1671 फर्स्ट ऑब्जर्व्ड द प्लांट सेल, पहली बार इसने बेटा प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया। पहले डेड सेल, उसके बाद लिविंग सेल और अब उसके बाद प्लांट सेल। ठीक है बेटा, तो पहले हमने डेड सेल को देखा, उसके बाद हमने लिविंग सेल को देखा और उसके बाद हमने प्लांट सेल को देखा। तो तीन किस्म की सेल्स। तो हम कहते हैं बेटा फ्रॉम 1665 द फाइंडिंग्स ऑफ सेल बायोलॉजी टेक्स प्लेस। द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of cell or called cell biology or cytology। उसको हम क्या बोलते हैं, या सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। वो ब्रांच जहां हम स्टडी करते हैं सेल की, उस ब्रांच को हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी या बेटा साइटोलॉजी। क्या बेटा, साइटोलॉजी। तो तीन का कंट्रीब्यूशन हमने पढ़ा। पहला हमने बताया क्यों आपके इस लेसन का नाम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स का स्ट्रक्चर है वो क्या है बेटा, all human beings consists of a small unit which are called cells। That is why structural unit and functional unit, every function performed by living organisms or occurred within the cells। हर कोई फंक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं वो किससे करते हैं या कहां करते हैं, सेल के अंदर करते हैं। दैट इज व्हाई इस लेसन का नाम क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद बेटा हमने कहा सेल को हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बायोलॉजी में हम सेल को कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन केमिस्ट्री वी कॉल एटम, वी कॉल एटम। उसके बाद हमने कहा ये जो सेल है इसका वर्ड कहां से आया है, लेटर वर्ड सेलुलर, जिसका मतलब क्या है, लिटिल रूम, हाँ लिटिल रूम्स। उसके बाद हमने कहा सेल की फाइंडिंग स्टार्ट हो गई, सेल की फाइंडिंग स्टार्ट हो गई। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने हमें बताया 1665 में, जब उसने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया और प्लांट के सिस्टम की एक पार्ट को उसने ऑब्जर्व किया। उसने क्या देखा, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। उस हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर का नाम उसने क्या रखा, सेल। उसने अपनी ये फाइंडिंग एक बुक में पब्लिश की जिसका नाम था माइक्रोग्राफ। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट जो एक डच बायोलॉजिस्ट था, डच का रहने वाला था, उसका नाम था एंटोन वेन लीवॉनहुक। हाँ, 1760 में इसने क्या ऑब्जर्व किया, पहली लिविंग सेल। कौन सी लिविंग सेल, बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, इन दोनों के बाद और एक आया मार्सेलो मर्फिगी, जिसने इसके बाद 1 ईयर 1671 में पहले ऑब्जर्व किया प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है बेटा, तो लेटर हमने देखा फिर प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी, साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी या सेल थ्योरी या बेटा सेल थ्योरी की डिस्कवरी। तो बेटा वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे टुडे। दिस इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है। ये बेटा अभी इंट्रोडक्शन का लेसन है, क्योंकि